इन कॉन्फ्रेंसेस, राइट? कॉन्फ्रेंसेस सब तो पब्लिश कर किए होंगे. कॉन्फ्रेंसेस मीन्स IEEE कॉन्फ्रेंसेस, स्प्रिंगर बेस्ड कॉन्फ्रेंसेस, और जो भी अपना UGC बेस्ड भी होता है. Most of you have published. So I will urge all of you, whatever conference paper you have published, try to extend that. Are you getting? Suppose that you have published some paper, conference paper in IEEE. I am giving the example of IEEE. When you are sending the paper, right, you will get somewhere in the means उसका जो बना हुआ रहता है, some instructions are there. So you will be able to get it कि some percentage of paper will be published in certain journals in collaboration with that conference, right? देखा आप लोगों ने? नहीं देखा. अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा. Whenever you are sending any paper in any conferences, पहला चीज सर्च कीजिएगा whether it is tied up with some journal. आंख बंद करके मत भेजिएगा. Right? Whenever you are sending, once again I am repeating, whenever you are sending the paper in any conferences, first criteria रखिए, always try to communicate in IEEE. Second रखिए Springer, right? और जब whenever you are going to submit it, before that you just check it whether this conference is associated with or have a collaboration with any particular journal. Right? Some of the conferences, most of the conferences right now, they are going through this process. So what is the beauty of this? Suppose that your particular paper has been selected in that particular conference, ठीक है? And it's on good topic, so you can get the chances. They will give you a mail to extend your paper and send it for the journal. So it is the easier way to have the publication in journal. आपका वही काम रहेगा. बोलते हैं कि 30% more uniqueness should be there. Means you have to add 30% of new work in that one. And if it catches the eye to them, it will be published easily. Otherwise, it's very tough to publish paper in SCI journals nowadays. SCI Scopus also, it has been. हाँ, now Scopus का भी वही background हो गया. Reviewers are giving such a. Madam, we are lucky even though we are getting some comments. Nowadays, what they are doing, even they will not see your paper, they will write out of scope, हाँ, flooded of paper, done. So, as we are in teaching profession, there is no way out. Publication we have to do. CV में हमेशा कम से कम 2 तो ऐड होना ही होगा. Yearly, sir. Yearly, sir. You are telling yearly. If yearly we are getting 2 SCI paper, it's very good. SCI paper में sir, minimum 6 to 9. If you are very lucky, right? Otherwise, तो कितना घूम के कहाँ जाता है पता ही नहीं जाता. तो सब एक SCI, you think? And अभी तो ऐसा हो रहा है. Even though it will go in first review, second review, third review, and lastly they will turn it down. Turn it, yes ma'am, that is okay. Every time you will have a hope, now I will get the acceptance message. Your paper has been accepted. But alas, you will get your paper has been rejected even after the review of 4 rounds. And once you are in the teaching profession, you have to bear this pain. करना ही होगा इतना. And every day you will start with a stress. मेरा तो कुछ नहीं हुआ. यही होता है, दिन भर हम भी यही करते हैं. जो पेपर डाला in the morning, भगवान बोलते हैं कि भगवान का नाम लो. भगवान का नाम लेके मोबाइल खोला, कहाँ डाला था, कुछ आया. I'm telling you the correct thing. ठीक है? और सुबह ही कुछ दिख गया. Your paper has been declined. तो बस नागासाकी पे बम गिर गया. घर के जो बाकी लोग हैं सब पे छूटेगा. उसके बाद ऑफिस जाएंगे तो माय डॉटर इज देयर. मम्मा कोई पेपर रिजेक्ट हो गया क्या? मूड ऑफ है. ठीक है.
मेरी माँ कुछ हो गया क्या, तो नाउ दे आर अवेयर कि इसका कुछ टर्न डाउन हो गया है, दैट्स व्हाई शी इज अपसेट। ठीक है, और व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द डिपार्टमेंट, यू पीपल आर अवेयर, मीन्स नो वेयर यू आर गोइंग टू गेट द रिलीफ सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग। इफ यू हैव टू सस्टेन इन द सिस्टम यू हैव टू डू, और कोई आपको हेल्प नहीं करेगा सर। ठीक है, अगर आप वो कोई काम कर रहे हो, इन आवर इंडियन सोसाइटी 10 people विल बी देयर हु विल से आई विल accompany you, डू द कोलैबोरेशन, बट जब काम करने का बात आएगा मैदान खाली। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि मेक वन सच टाइप ऑफ ग्रुप हु हैज द सेम सिंक्रोनाइजेशन लेवल। छोटा काम ही करिए, और ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत बड़ा काम किए तभी एक्सेप्ट। कभी कभी देखिएगा, आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि हमारा ये काम इतना जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिसमें बहुत सारा एफर्ट लगाइए वो नहीं हो रहा है। तो सो दिस रिसर्च फील्ड इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, फुल ऑफ as solar 24/7. Solar is little bit certain कि at least you will get something, but so इसलिए कॉन्फ्रेंस पेपर कीजिए अच्छे कॉन्फ्रेंसेस में, और फिर उसको कन्वर्ट करिए। ठीक है, और एक वर्क तो आप लोग इसी में कर सकते हैं। आप लोग स्टार्ट कीजिए, मतलब कोई एक छोटा सा अनप्रिप, जहाँ देखिए रिकॉग्निशन कहाँ जल्दी मिलता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, रियल वर्क में जहाँ वाइड रहेगा। रिसर्च क्या है, आपको सिंपल सा चीज़ बताते हैं, स्लाइड्स को छोड़ दीजिए। व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग आवर रिसर्च वर्क, क्या करते हैं, कोई भी रिसर्च हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के पहले क्या सर्वे करते हैं, दैट इज नोन एज लिटरेचर। ठीक है, एवरीवन हैज देयर इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च एरिया, किसी का पावर सिस्टम, किसी का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन आजकल 50% वर्क, जिससे पूछिए क्या काम कर, रिन्यूएबल, आगे नहीं बोलेगा तुम्हारा क्या एरिया है, रिन्यूएबल। उधर जाके पूछिए तुम्हारा क्या एरिया, हम भी रिन्यूएबल में ही कर रहे हैं। फिर रिन्यूएबल को थोड़ा पूछिएगा, रिन्यूएबल में क्या कर रहे हो, सोलर कर रहे हैं, आगे कुछ नहीं बोलेगा, सोलर पे कर रहे हैं, सोलर पे क्या कर रहे हो वो नहीं बताएगा। ठीक है, अब अगर इस रूम में suppose that 50 to 60 persons are there and I'm asking all of them what is your research area, and among 60-50 are telling renewable, see the मतलब what is the predictable thing। ठीक है, उसमें फिर 50 बोल रहे हैं कि हम सोलर में काम कर रहे हैं। आप अगर 51% है तो आप सोचिएगा हम क्या करें। 50 बंदा सोलर में ही काम कर रहा है, रिन्यूएबल में ही काम कर रहा है, हमारे लिए क्या बचा, विल थिंक ना, क्या कहिएगा, हम नहीं करेंगे सोलर में, यही होगा। बट इट्स नॉट लाइक दैट। सोलर में वो क्या कर रहा है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केसेस, केस तो आपको नहीं पता है ना, 50 आदमी कोई केस आपको बताया, सब बोल रहा है रिन्यूएबल, सब बोल रहा है सोलर, लेकिन कर क्या रहा है किसी को कोई पता नहीं। तो डोंट बी गेट डिसहार्टेंड। अब 50 आदमी सोलर में कर रहा है तो हम 51 है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, वो 50 कर रहा है, हम 51 हम भी करेंगे। But what will be the authenticity? How will you will be able to get your work? मैडम बोली कि हम लोग सर्वे करेंगे। For starting any research work, first of all you have to do the survey. That is known as literature review. ठीक है, literature review में क्या करते हैं भाई, कौन क्या क्या किया। अब जिस एरिया अपना आपने चूज किया है उसमें रिसेंट बहुत सारा पेपर देखने का जरूरत नहीं है। Once you are going through so many papers, you will be confused. Last 5 years for your literature review, go for last 5 year papers. ठीक है, 5 year का पेपर आप डाउनलोड कीजिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप 100 पेपर डाउनलोड कीजिए, ओनली डाउनलोड 5 to 10. How can I choose 5 to 10? 5 to 10, suppose sir you are Google Scholar, have you heard the name of Google Scholar? आपके पास accessibility नहीं होगा, हमारे यहाँ है, जैसे हम कर सकते हैं, बिली कर सकते हैं, साइंस डायरेक्ट कर सकते हैं, तो easily I am getting, but आपको नहीं मिलेगा सर। आप Google Scholar पे डालिए, not simple Google, it must be Google Scholar, और जो आपका एरिया है, in which area you want to get the paper, type that, ठीक है, और लास्ट में लिख दीजिए लास्ट 5 years पेपर,
ऑप्शंस भी रहता है, आ जाएगा। ठीक है, अब आपने डाउनलोड कर लिया 100 पेपर, 100 पेपर पढ़ पाएंगे? वही चीज़ करिए जो कर सकते हैं। अब उसमें आपने 10 पेपर डाउनलोड किया, और जैसे हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं, कोई अट्रैक्टिव चीज़ दिखता है, उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना। हालांकि वहाँ पे सपोज दैट वी आर गोइंग टू परचेज सम मोबाइल, thousands of mobiles are there, but according to our choice and our limit, चाहिए तो सबको एप्पल ही चाहिए, तो हम लोग सब ले पाते हैं क्या? वही टेक्नो इकोनॉमिक करना है, फिर विद इन माई लिमिट वॉट एवर इज देयर आई हैव टू चूज दैट वन, राइट। अब 10 पेपर निकाले तो एक बार कोई पेपर लेगा नहीं, इसमें तो कुछ कुछ अच्छा दिख रहा है जो मेरे पल्ले पड़ रहा है। सबका अपना पढ़ने का तरीका भी होता है, ऐसा नहीं है कि जो पेपर मुझे अच्छा लगा वो आपको भी अच्छा लगा, राइट। अगर वो पेपर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो ट्राई टू फिनिश दैट पेपर। जिस पेपर का 10 दिन में पढ़िएगा एक पेपर को, तो कुछ पल्ले नहीं आएगा। सपोज दैट वंस यू हैव स्टार्टेड वन पेपर, ट्राई टू फिनिश इट विद इन 2 days और इन कंटिन्यूटी। आई विल से दैट टर्म कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं है कि 20 पेज का पेपर है तो 2-2 पेज रोज पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। जो भी उठाया है फिनिश इट इन कंटिन्यूएशन, एंड वॉट एवर यू आर गेटिंग उसको एक पेन और पेपर पे लेकर मार्क कीजिए। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। पेन और पेपर इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग का आदत बहुत खराब हो गया है। वी आर गोइंग थ्रू ए वेरी बैड फेज। वी हैव लेफ्ट बुक, नेवर नाउ वी आर गोइंग टू रेफर बुक। टेक्स्ट बुक कहाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, इट्स अ वेरी बैड हैबिट। मेमोरी में रहेगा, उसमें जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा नहीं, जो आप समझ सकते हैं, दैट इज योर ओन लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड योर ओन थिंग। वो दूसरा फिर नहीं समझ पाए, वो भी मान के चलिए जो आप लिख रहे हैं फिर दूसरे आदमी को पल्ला नहीं पड़ना चाहिए। वो आपका अपना फाइंडिंग है। ये बहुत बड़ा की फैक्टर आप लोगों को बता रहे हैं। पढ़ के जो भी फाइंडिंग आपको समझ में आया, वो अपना कोड वर्ड, जैसे मोबाइल को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी एपरेटस को करते हैं, दैट इज योर की वर्ड। जो भी फाइंडिंग्स लिखी बगल वाले को नहीं समझ में आना चाहिए, तो फिर जो आपने उस पेपर को पढ़ने में समय बिताया दूसरे को तो ऐसे ही मिल जाएगा, राइट। वो फाइंडिंग करने के बाद, फाइंडिंग कैसे करेंगे? एनालिसिस बोलते हैं उसको। पेपर, उसका फाइंडिंग्स में क्या क्या है, मेथोडोलॉजी में क्या क्या लगाया उस एरिया में, ठीक है, उसका लिख दिए। उसको बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू इन टेबुलर फॉर्म। ट्राई टू गेट इट, लिटरेचर रिव्यू इन टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट पेपर का क्या आपका एरिया है, उसका फाइंडिंग क्या है। फाइंडिंग मीन्स, फाइंडिंग में मेथोडोलॉजी, क्या मेथोडोलॉजी लगाया है, क्या पैरामीटर कंसीडर किया। फिर उस एरिया का दूसरा पेपर पढ़िए, उसका नाम, उसका एरिया, उसका फाइंडिंग। कम से कम 10 पेपर को बनाएंगे, ठीक हो गया। ये लास्ट 5 ईयर मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसेंट वन। अब उस पेपर को लेके जब आप बैठते हैं, ट्राई टू एनालाइज इट, व्हाट इज द वाइड इन ऑल दिस पेपर्स। वाइड समझ रहे हैं, दैट इज रिसर्च गैप। अब मान लीजिए कि कोई, जैसा मैंने सिंपल टर्म में ही बोल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड सिस्टम की बात की, 2 सिस्टम में लगा हुआ, सोलर लगा हुआ है, विंड लगा हुआ है और ईवी लगा हुआ है, ठीक है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ए सिस्टम, बट इफ आई एम प्लानिंग फॉर एनी रूरल एरिया, ठीक है, तो वाइड क्या हुआ, आप उसमें बायोगैस तुरंत लगा दे सकते हैं। हाइड्रो वहाँ फिजिबल नहीं होगा, लेकिन बायोगैस वहाँ फिजिबल हो जाएगा। तो आपको वो भी करना है, सिस्टम जो डिज़ाइन करेंगे किस चीज़ के एक्सपेक्ट, राइट। वो हो गया वाइड, मीन्स दैट इज द वाइड इज नोन एज द रिसर्च गैप। इसमें ये चीज़ ऐड करके उस गैप को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। WIDE, क्या सर? वाइड स्पेलिंग सर वाइज में अटके, WISE, हाँ, ठीक है। तो वो रिसर्च गैप हुआ आपका। रिसर्च गैप आपने बना लिया 10 पेपर का। अब उसमें है कि बेस्ट अपॉन दैट रिसर्च गैप यू हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च, एंड वंस यू हैव फ्रेम्ड योर ऑब्जेक्टिव, आधा काम आपका रिसर्च का खत्म हो गया। Got it? First you have to go for the literature review according to your area from
last 5 years of good reputed journal paper. Okay, read it, go through it properly and try to find out the void in all these areas. आप उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? That void is known as research gap. Research gap आपको मिल गया, आपको पता चल गया कि ये मोटर को कहाँ फिट करना है, आधा काम तो हो गया. And based upon that research gap, you will mend your objective of the research work. So basically, if we are going for our PhD work, तो 5 to 6 objectives are more than sufficient. अब उसमें एक चीज़ आपको और बता दें. Suppose that you are going to do your PhD work. 6 objective you have maintained. अब suppose that try to means make a loop कि some master MTech student must be there. बात को आप समझिए कैसे काम होता है. 6 आपने ऑब्जेक्टिव बनाया for your research work. Now you have to take in the loop to your MTech student. आप फैकल्टी हैं किसी इंस्टीट्यूट में PhD कर रहे हैं. If it is a well recognized institute through AICTE or MHRD, तो definitely MTech courses will be there. ठीक है. अब MTech स्टूडेंट्स को ढूंढिए जो उस एरिया में काम कर रहे हैं and try to give one objective to them also. Because MTech is a small work. आप उसको अपना एक ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, उसका MTech हो जाएगा. But what you will get? Suppose that 2 MTech students are associated with you. 2 objectives have been fulfilled. उसका भी MTech हो गया आपके अंडर में और आपका वर्कलोड कम हो. Right? So in this way we have to channelize and gear up our research. Right? पहले पेपर पढ़िए, ज़्यादा पेपर ना बनाइए. मतलब 100 पेपर के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, 10 पेपर ही ढूंढिए, उसका रिसर्च गैप ढूंढिए, रिसर्च गैप से ऑब्जेक्टिव बनाइए, ऑब्जेक्टिव बना के अच्छे MTech स्टूडेंट को इन्वॉल्व कीजिए और अपने वर्क को ईजी बनाइए. And suppose that now you are able to complete your objective number 1. As soon as your objective number 1 is going to be completed, try to write a small little conference paper. ये नहीं कि पहले हम पूरा कर लेते हैं उसका पेपर नहीं. ये स्टेप को ये मैंने सीखा खुद से. I don't know how many people are going to apply it, but whatever problem I have faced in my research work when I was doing my PhD, no one was able to help me properly. But whatever mistakes I did, so gradually I learned a lot of things. When you are thinking that once my objective is going to be finished, then I will publish paper, it's very tough. All the work are going to be jumbled, and in the last section you will not be able to get anything because you will be pressurized like anything. Are you getting what I am trying to say? Pressurized in the sense कि 3 साल बीत गए, थीसिस भी सबमिट करना है, थीसिस लिखना भी है और रोज गाइड का गाली भी सुनना. राइट? तो बेटर वे इज, मेरे साथ ऐसा हुआ, आई हैव जम्बल्ड विद वर्क. कोई बताया नहीं, कोई समझे नहीं और लास्ट में I finished my work with good publication, but stress was like anything. And now almost 3 students has completed my PhD under me. Same thing I am following. एक ऑब्जेक्टिव फिनिश करो, छोटा पेपर बनाओ, उसको कॉन्फ्रेंस में डालो. Once it is going to be accepted in conference, modify करो, जर्नल में डालो. And very easily they are getting the publication. और जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव 1 आपका फिनिश हुआ, उससे एक कॉन्फ्रेंस पेपर निकल गया, एक जर्नल पेपर निकल गया, एक चैप्टर भी आपका निकल गया. राइट? अगर 15 पेज का पेपर आपने भेजा, वो तो रिजल्ट बेस्ड है, तो थोड़ा इलाज कर दीजिए. 1 ऑब्जेक्टिव फिनिश, 1 कॉन्फ्रेंस पेपर, 1 जर्नल पेपर, 1 चैप्टर. फर्स्ट पर टिक मार दीजिए. उसमें टारगेट आपको सेट करना है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको कितने महीने में कंप्लीट करना है. अगर सपोज दैट यू वांट टू फिनिश इट इन 9 months, तो आप कॉपी में 6 month लिख के रखिए. 6th to 9th में चला ही जाएगा. अगर 9th लिखेंगे तो पक्का 1 साल लगेगा. तो 3 months आप लेके चलिए.
सेकंड ऑब्जेक्टिव में लाएंगे। दूसरे बच्चे को एमटेक को जो लगाया है उसको रोज वो करेंगे, क्या कर रहा है, और इधर का 3 आप खुद से टेकअप कीजिए। इफ दे आर वर्किंग ऑन फर्स्ट एंड सेकंड as well, you have to work for the third one also. It is not like that they are working and you are sitting. It will never happen. They are only going to support you. अगर 2 भी आपका हो जा रहा है तो it's like any मैम ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप सेट किया है जी इट में भी दे आर इंटरकनेक्टेड, इसका रिजल्ट उसका काम में बिल्कुल, आता है, बिल्कुल। ये हो सकता है। हाँ। देन व्हाट वी शुड डू। सर ऐसा होता है कि देखिए फर्स्ट एमटेक का स्टूडेंट कंप्लीट करेगा, उसका रिजल्ट हमको चाहिए, तब मेरा जो हम कम कर रहा है उसका काम में आएगा। इसी सिचुएशन में व्हाट वी डू द यू डिसीजन। आर करेक्ट सर, बट वो वर्क तो पैरेलली चल रहा है ना। अब जैसे सेकंड ऑब्जेक्टिव पे मेरा एमटेक स्टूडेंट काम कर रहा है, थर्ड पे हम कर रहे हैं, तो रोज तो इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड वी आर सर्विंग आवर वर्क। या इट्स सिंक्रोनाइज्ड। और फर्स्ट चैप्टर सबका कॉमन होता है सर, इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर, इट इज कॉमन फॉर एवरीवन। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ना कि सिट विथ योर एमटेक स्टूडेंट। जो आप बोल रहे हैं आस्क्ड ए वेरी गुड क्वेश्चन, बट व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर तो एवरी डे वी आर गोइंग थ्रू द आउटपुट ना, किसका किससे हो रहा है, तो दैट वे यू कैन फिनिश योर राइट। अब आप लोग पूछिए, कुछ पूछना है तो। स्टोरी पूरी बेंड हो गई, स्लाइड्स खुला नहीं। स्कॉलर से लास्ट 5 इयर्स का जो हाँ, हो है जाता है वैसे सर। से काम हो जाएगा। हाँ सर, बहुत है सर, वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। कितने लोगों को पढ़ने की हैबिट है, जेन्युइनली बोलिए। तो अभी लास्ट पेपर लेंगे 2 घंटे के बाद नींद आने लगती है। वो उसी जो लास्ट 5 इयर्स में गूगल स्कॉलर से जो मिलेगा हाँ उसी से 5 हम कैसे चूज करेंगे 5? सर, वो आपका अपना इंटरेस्ट होगा। वो हम ये नहीं बोल सकते कि आप ये 5 ऑब्जेक्टिव चूज कर लीजिए, दैट विल बी योर ओन इंटरेस्ट। आप अपने इंटरेस्ट से चूज करें। मार्केट में जाएंगे, आप कहीं खाना खाने जाते हैं, सब पे समझ गए ना, दैट इज योर ओन चॉइस। रैंडम पढ़ना Yes, पड़ेगा, yes. इससे आपको इंटरेस्ट हाँ, रैंडम दिस वे द रिसर्च इज गोइंग ऑन। और जब वो रिसर्च कर लेते हैं तो ऐसे 1000 सिस्टम आप प्रपोज कर सकते हैं। मैंने बात की थी प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक। आजकल मैक्सिमम पेपर में आप देखेंगे प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस ऑफ हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड सिस्टम, बाई लेवलिंग मॉडल ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक renewable energy based system. So these are the new terms, meaning is same but it is attracting the reviewer. उनको लगता है भाई कुछ तोप मार, right? So this way we have to find out the research gap, we have to compile it and we have to do the work together. अब देखते हैं आप लोग में से कितने लोग together आते हैं और हम लोग कुछ करें, ठीक है? तो ये जो स्लाइड्स हमने दिखाया था टोटली, अब उसको खोलने से कोई उसमें वही बताया हुआ है। फर्स्ट 10 स्लाइड में एनर्जी सिनारियो इन कंटेक्स्ट विथ इंडियन एनर्जी सिनारियो एंड ग्लोबल एनर्जी सिनारियो, फाइन। बेसिक स्लाइड्स में वही दिखाया था। देन आई हैव प्रपोज फॉर वन रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सोलर, विंड, बायोमास एंड ईवी, and during which period all these renewable energies and requirement according to the load demand. After this the entire proposed system has been optimized to get the lesser cost of the proposed system. So for optimization 3-4 optimization technique has been used. बहुत सारा optimization अभी आ गया है, PSO वगैरह तो बहुत पुराना हो गया है, and based upon this 3-4 optimization technique the cost value has been calculated and again they have been validated, through which optimization method the minimum cost value has been got, and whichever optimization model was that, in the last session it has been written कि this is the best suited optimization technique for this proposed renewable energy based system. That was all inside the slide, right? मतलब एक सिस्टम मैंने प्रपोज किया और फिर उसको ऑप्टिमाइज किया with the help of the different meta heuristic optimization technique, or whatever result I have got with all this meta heuristic optimization technique, that has been validated again, means that has been compared
किसमें कितना कॉस्ट वैल्यू आया, जिसमें सबसे कम आया, कंपेयर विद अदर पुराना जो हाँ पूरा, पेपर्स। यस, दैट इज वन ऑफ द वे टू वैलिडेट योर प्रपोज सिस्टम। आपने कोई सिस्टम प्रपोज कर दिया, हम क्यों मानेंगे कि आपका सिस्टम बेस्ट है? सपोज दैट आई हैव प्रपोज सम सिस्टम एंड आई एम टेलिंग यू हैव टू गो थ्रू दिस सिस्टम, व्हाई यू विल गो? इट नीड द वैलिडेशन। हम कैसे मान लेंगे जो काम हम किए हैं वो सही है? हाउ यू आर गोइंग टू अग्री मी? नो, इफ आई एम टेलिंग यू माय सिस्टम इज द बेस्ट वन, on which criteria you are telling your system is the best one? For that we need the validation through the previous work, validation through the experimental result. There are so many ways to validate your system also, but the conventional one is the thing which you are getting from the previous one. ठीक है, मैंने मान लीजिए 4 महीने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक नया लगाया तो एक PSO को भी उसमें डाल दिया, because it is the conventional one, right? So this way we are going to validate our entire proposed system. Got You, it? which optimization you utilize in this? There are so many, sir. My research scholar has used Red Wolf method, then Acto class topper, so many Acto, ACTO, Acto class topper, fine. Then he has done modified Jaya एल्गोरिथम था, तो उसमें मॉडिफाई किया गया, कुछ पैरामीटर्स को चेंज कर दिया। अब जया लिखने से पेपर एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, मॉडिफाइड किया तो एक्सेप्ट हो गया, राइट? द स्टोरी आई एम टेलिंग यू। उनको कुछ नया चाहिए, अब मॉडिफाइड किया तो क्या करेगा? एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही कुछ पैरामीटर चेंज किए, हेर फेर, कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। रिसर्च वही है, वी आर डूइंग रिसर्च। उसी चीज को आप और कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं इन द सेंस ऑफ द रिव्यूअर, उनको लगे कि आप कुछ जेन्युइन काम कर रहे हैं, ठीक है ना? ईच एंड एवरीथिंग इज प्रपोज्ड, वी आर टॉक सब हाइपोथेटिकल, वही बोल रहे हैं ना, प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक किया हुआ वर्क है, प्रोबेबिलिस्टिक यू आर प्रपोजिंग। अब ये सिस्टम जो हम प्रपोज किए ये कहीं चल रहा है कि नहीं ये तो नहीं पता है ना, हमने खुद बनाया लेकिन हम उसको चला तो नहीं रहे ना। दिस इज द प्रपोज रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड सिस्टम, जिससे कि आपको कॉस्ट बहुत कम मिनिमाइज हो गया। तो कितना चीज़ की है, सिस्टम प्रपोज किए, फिर ऑप्टिमाइजेशन लगाए, डिफरेंट उसका कॉस्ट फंक्शन, ये वो कितना चीज़ निकाला। देन लास्ट में कि भाई जिसको हमको सुपीरियर बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्टो टॉपर को हमने सुपीरियर दिखाया है तो कोई फिर उसके लिए इसी सिस्टम में एक्टो टॉपर ही है। माइंड में सेट करके रखना है किसको अच्छा दिखाना है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? सेम पेपर फिर मैंने पब्लिश किया, ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंज किया, उसमें एक्टो टॉपर को नहीं दिखाया, उसमें रेड वुल्फ को दिखाया, इट इज़ गिविंग द बेड। तो क्या किया, उसका कुछ पैरामीटर्स को डाउन किया, उसका रिजल्ट डाउन हो गया, इसका कुछ अप कर दिया। मीन्स क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेशन, मैंने पूरा खेल ही अप्रॉक्सीमेशन पे चलता है, राइट? गॉट इट? ये पूरा, यस सर। One problem I have faced, suppose I have found out the problem statement. Right. Now I have started my work. Right. I'm using one software environment, say for MATLAB. Right. So there I have started coding. Right. Now finally, there are some logics that I have to use to complete my work. Right. So I am not getting that logic from my mind. I can use my mind, but I am not being able to find out. Is there any place where from I can get any help or any code somewhat like that? Sir, MATLAB code you will. No, MATLAB code, whatever is available in website, those things are not related to what I am doing right now. Sir, you just let me know. I will give you my mail ID. You just let me know your problem. Okay, accordingly I will suggest you. Randomly I will not be able to tell the accurate answer. Because MATLAB code के answer everywhere you will be flooded with the MATLAB code. कहीं भी डाले, each and every code you will get, and according to your requirement you have to modify. Whatever is available in website, even in MATLAB's website, I have searched there. Okay. I have even downloaded, tried to apply, but those things are actually giving something odd results. हाँ, initially it will give because you have to modify. एक बार में नहीं होगा. It is not meant for you, na.
they have programmed it for their own problem. Fine. So your problem is different from their problem. So you have to modify. That is the standard one. Suppose that we have to write any sentence, we have to take the help of A and B alphabets, right? So you have got one program, and according to your requirement, you have to do the re-modification in that particular code, which is available on the website. No, Exactly. that thing is done, ma'am. Even after remodification, the inputs I have changed, the objective function that I have changed inside that MATLAB coding. Even after that, means many Something is cases missing. many cases I have found there it's not giving Sir, the if it is required- possible, you just share the main that you are not getting it. I will try to do it, because one of my scholar means now he has gained a lot of command over MATLAB. Even I don't have that much. The correct thing I am telling regarding optimization, I don't have so much idea. Means core problem I am giving them, they are doing it. But now he has a lot of command in MATLAB. He is doing each and everything. So if you want to share it with me, not the exact one, उसका कुछ prototype भी आप भेज सकते हो, तो I can suggest you something after seeing that. Okay? और कुछ पूछना? Otherwise I will wrap it up. बताइए. Actually, madam, I don't have any IEEE membership. Okay. ले Frankly लीजिए. speaking. ले लीजिए. So, what will be the process to Process, get go that to- wise? How you get that particular? Sir, Can you just आज का- mention the steps. सर क्लास लेते हैं तो फिर हम लोग असाइनमेंट देते हैं ना. Okay. हाँ. आज का असाइनमेंट आप लोग का IEEE के साइट पे चाहिए. Okay. Suppose that if we want to get something and simply someone is narrating, हम बोल देंगे तो exact something may be missed out there. Once you are going to the proper site, you will open so many things you will get. If you want to take the membership is current membership, renew membership. Options you will get it. Just you go for the membership, option will be there, payment, do it. Once you are the official member of IEEE, a lot of authentic messages you will get in your mailbox. जितना हम बताएं शायद उससे भी बहुत ज़्यादा. Okay. Right? But first of all, you have to be the member of that official site. ठीक है? मेंबरशिप में कितना कॉस्ट है? Sir, membership, there are two types of membership they will show you. One is student membership. Student membership you will go get within $14 to $15. Right? $14-15 डॉलर में होता है सर. डॉलर में 14 to 15. नहीं $14. When you will convert it in Indian currency, it will be 1100 or 1400 between Okay, this. okay. And if you want to be a graduate, different categories are there. UG student, PG student, and research scholar. 3 categories are there. So for UG scholar, it is the lowest. ये हर साल के लिए होता है? हाँ, it is, yeah. For every year. What do you think that which one is actually more feasible for us? 3 years का. Sir, we can't go for UG. UG one Okay, नहीं जा okay. सकते. So, Either you you will can. choose research scholar? हाँ. रिसर्च स्कॉलर में कितना? रिसर्च स्कॉलर थोड़ा सा ज़्यादा है. UG का सबसे कम है और उसमें शायद 32 या 30. वाइस का फ्री है? Why is free? But I have to take the membership. Membership first, you have to take the membership of IEEE because WISE is a branch of वो मेन है. दैट इज फ्री. एट फर्स्ट मेंबरशिप मेंबरशिप ईयरली रिन्यूएबल. तो हर साल के लिए हर साल रिन्यू करना पड़ेगा. तो हर साल के लिए हर साल अगर सर आपको 1214 रुपए पे करना तो निकले सर. The benefits which you are getting against IEEE for paying 14 to 15 साथ ही रहने में कितना sort of. There are lot of provisions over there. First of all, go to the official site, check it, and according to your requirement, you do it. Right? So it's done from my side. Very happy to meet all of you. I don't know how much happy you people are. Right? So very soon we are going to meet again, sir. I need a collaboration with all of them regarding so many things they have promised me. So with these words, I am winding it up. So if you want to ask anything, it's fine. Otherwise, I will leave. Okay?
Thank you, ma'am, for this wonderful interactive session with us. Thank you so much. Okay, now I request our coordinator, Professor Sumit Banerjee, sir, to give a small token of appreciation from our department. It's very nice to interact with this. I was a little bit hesitated how to come over here due to the weather condition, but now I'm very much happy to meet all of you. Thank you, ma'am. I'm always there. And thanks to Dr. Sumit once again for giving me this opportunity to be in front of all of you. So hopefully very soon I will see all of you again. Right? Thank you very much. So, A very good morning to our respected coordinator, Professor Dr. Sumit Banerjee sir, co-coordinator Dr. Shivendu Mahato, and all committee members, also esteemed faculty members, eminent guest speaker, and all other present over here. I, Dr. Sneha Sultana, on behalf of Dr. B.C. Roy Engineering College of Electrical Engineering Department, I heartily welcome you all to the AICT Atal FDP program on Sustainability and Innovation in Energy Engineering and Sensor Technology. Today, as guest speaker, we have with us Dr. Namrata Kumari, Associate Professor, Department of Electrical Engineering, NIT Jamshedpur. May I have the honor to read her biodata first. Dr. Namrata Kumari received her PhD from the National Institute of Technology, Jamshedpur in 2017, followed by MTech in Power System from NIT Jamshedpur and BTech from the National Institute of Technology, Patna. She is currently working as an associate professor in the Department of Electrical Engineering at NIT Jamshedpur. Dr. Kumari has nearly 23 years of experience in academics and research. She has published more than 75 research papers in quality journals and international conferences. Dr. Kumari is a senior member of IEEE. She has served at several international conferences as session chair, advisory committee member, and technical committee member. She is the editor of Springer book named Smart Energy and Advancement in Power Technologies. Dr. Kumari has also reviewed articles in journals including IEEE System, IEEE Access, Applied Energy, Solar Energy, and Energy. Her research interests include solar power generation and conversion, solar radiation estimation, modeling and simulation of renewable energy-based system, microgrid modeling operation and control, hybrid energy system, and forecasting renewable power system energy management. Thank you, ma'am. Now the stage is yours. Please. good morning to all of you present over here. So I think this is going to be a very happy session for all of us. I am telling happy means there is no need to be stressed out that I am going to teach you something, right? We will have a live interaction with each other, right? So I think most of you are the faculty somewhere and research scholar if I am not wrong, okay? So first of all, I need an introduction from all of you. So may all of you introduce yourself. I told it is going to be a very happy session. You know, I don't came over here to teach you people or say something like that. I want a live interaction with all of you. Is it going to happen? Yeah? We will talk like anything. As in classroom we have a happy session within the scholars, within the teachers. So I want that type of interaction with all of you. Right? So please introduce yourself first. In one line, there is no need to be hesitated. Right? Is it possible? Please.
Myself, Jasmine Jagania. I'm assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering in NSHM Knowledge Campus, Durgapur, and I have 16 years of teaching experience. Thank you. ma'am. I am Jyoti Sharkar. I am assistant professor here in Missile Engineering College and in Electrical Engineering Department. Thank you. Ma'am, myself, Shauraj Banerjee. I'm working there in NIT Nagaland, assistant professor in EEE department. NIT Nagaland. Yes, ma'am. Thank you. Myself, Modash Mahapatra, Yeah. AP in this college, Electrical Engineering Department. Myself, Deepak Kumar Dhar, AP in this college, Dr. Vishnu Engineering College. Thank you, sir. Myself, Adit Rai, AP in Dr. B.C. Rai Engineering College, Electrical Engineering Department. Thank you. Thank you so much. I am Sanjay Kumar Shah. I am working in this college near about 16 years. Thank you, sir. Myself, Orko Bhatta. I am from Vishnu Public Institute of Engineering. Myself, Rahul Ghosh. I am a lecturer in NHID Durgapur. Thank you. Meet myself, Basudhar Mondal. I am assistant professor at Dr. Vishnu Engineering College. Last 6 years working in this college. Myself, Chandan Pal. I am working in this college from 2013, assistant professor in Electrical Engineering Department. Myself, Topun Chatterjee, working BC Engineering College, teaching experience 15 years, industrial 19 years. Thank you. Thank you, sir. Myself, Shomen Vishwas. I am acting as the assistant professor in Dr. B.C. Engineering College for last 10 years. Thank you. Myself, Mrs. Priyanka Datta. I am working in Swami Vivekananda School of Diploma as a senior lecturer. Myself, Sudhir Kumar P. I am working as a senior lecturer in Swami Vivekananda School of Diploma. I am having 13 years of Myself, Milaki Sharkar, working in Dr. B.C. Rai Polytechnic in Electrical Engineering. I am Saurabh Bhattacharya, working in Dr. B.C. Rai Polytechnic in the Electronics and Telecommunication Engineering Department. Myself, Madam Abhishek Mondal, I am lecturer in Electrical Engineering Department from Dr. B.C. Rai Polytechnic. Myself, Subhendu Namdik, and I am working as an assistant professor in Dream Institute of Technology, Kolkata. Myself, Suman assistant professor of Dream Institute of Technology, Engineering Department. Good morning, ma'am. Myself, Arindam Mondal, I am working as an assistant professor in Dream Institute of Technology in the Department of Electrical Engineering, and I have working experience of 7 years, and I am my research area in digital image processing, embedded systems, and I am doing research in NIT Odisha Pradesh. Thank you. I am Abhishek Pal, working as a lecturer in BC Rai Polytechnic and currently doing PhD from CSIR CMER. Myself, Amit, I am working as a lecturer in a diploma engineering college for last 7 years. Good morning, ma'am. Myself, Kailash Bhavri. I am working as a lecturer in School of Vivekananda School of Diploma in Durgapur. Good morning, ma'am. I am Devashish Banerjee, HUD Electrical Engineering from Dr. B.C. Rai Polytechnic, Durgapur. I am Dr. Shourabh Pal. I am working as an assistant professor in this college in the Department of Electrical Engineering Department. I have an experience of 2 years. Thank you. So I welcome all of you in this session. So I am I have been introduced to all of you. I am Dr. Kumari Namrata, Associate Professor in the Department of Electrical Engineering, NIT Jamshedpur. So today we are going to discuss about the topic, what is my topic? Techno-economic analysis of a hybrid renewable energy based system. So as my bio was read by my fellows, he was talking about my area, estimation of solar radiation. Okay, so this topic is pretty much related with that one. So first of all, I want to just throw some light on that one. So as we are talking about estimation of solar radiation, right? So what is coming in our mind? What is this radiation? Radiation, whatever emitted light we are getting directly from the sun. So there are 2 ways to get the solar radiation. One is estimation and the second one is measurement. Am I right? Suppose that we are sitting over here and the question is asked, how much solar radiation we are getting today in Durgapur?
right? Very good basic question is there, and this question is pretty much related to this topic, techno-economic analysis of a renewable energy based system. So what will be your answer? If I am asking what is the solar radiation or radiation you are getting today at NIT Durgapur or your college, or particularly at any location I am talking. So either we are googling it, we are going through some sites on which we are able to see how much radiation we are getting, right, at Durgapur, or if we have some idea about it, okay, how much we are getting in seasonal wise, winter, then summer, then monsoon, so based upon that we are predicting it. Fine? Means prediction of solar radiation. And the second way is measurement. That is the accurate one. Am I right to all of you? Means I am talking about estimation of solar radiation. How you are going to predict or analyze the solar radiation at any particular location. Right? So two ways are there. Either you have to measure or you have to estimate. Right? For measurement, what we are doing? There are certain equipments or apparatus through which we are measuring it. But it's a very hectic process. Suppose that we have to measure the solar radiation for today particular day. Means on 17th January 2024. If we want to know the exact solar radiation of this particular place, that is Durgapur, what do you have to do? You have to measure it. The name of the measuring instrument is paranometer, right? Or paralleliometer. So basically we are going to use this paranometer. So what you will do? You will set up that equipment and hourly basis or minute basis or second basis you are going to measure it. But hourly is the best way to measure the radiation at any particular location. Means you will start from when you are getting the sun. In this still we are not able to see the sun at our place. So according to the availability of the sun, we are going to start the measuring process. Right? So if it is a summer day, we can start from 6 o'clock, as I am talking about the hourly calculation. Means at 6 o'clock, at 7 o'clock, at 8 o'clock, at 9 o'clock, means till evening you will measure it. So approximately 9 to 10 set of data you are going to get in one day. Right? Is it clear to all of you? So suppose that you have to measure the data for 1 month. So how many set of data you will be able to get? Right? But that's a very tedious job. Means for measuring 1 month of data, we have to take so much pain. And it's quite irritating. Kabhi chhoot bhi ja sakta. Sometimes even we can skip that one. In that condition, what we have to do? And you know how much data set you will be able to collect, the more accurate system you will have in your hand. Right? So to avoid all these things, what we are doing? We are going to estimate it. I told either measurement or estimation. Right? In measurement process, what are the problems we are facing? We are facing? Right. So everybody needs the smallest path. Whatever is easier for us, we are always trying that path. Right? So what is the second way? The second way is for estimation. So how you are going to estimate it? Estimate means approximation. What will be the approximate data which you will get today? Right? So when we are going for the approximation for anything, we have to take the help of any model, formula or equations. Am I right or wrong? Yes. You will not be able to approximate any system
by your own assumptions and calculation. For that you have to take the help of the any standard formula, standard equation or standard model. Right? Suppose that being an electrical engineer, when we are going to solve any circuit, we have to take the help of Ohm's law, Kirchhoff's law, right? Means they are well developed formulas, they are well developed model through which we are able to solve our basic circuits, right? Same thing happens in case of estimation of solar radiation also. There are certain basic models through which you will be able to predict the solar radiation data for any particular day, for any location, right? As we are going to discuss on the topic techno-economic analysis of a hybrid renewable energy based system, this thing which I am discussing right now, you will be able to correlate this section with that one. So now I was talking, what are the basic models? Basic models in case of estimation of solar radiation is given by Armstrong. Armstrong, the man behind giving the equation for estimation of, is it visible to all of you? Yes. Estimation of solar radiation. Right? He has given us the formula Hg by H naught equals to A plus B, this small n by capital N. Right? With the help of this basic equation or correlation or model, you will be able to calculate or you will be able to estimate the average solar radiation for any particular day at any particular location. Hg divided by H naught equals to A plus B in bracket small n divided by capital N. Small n bar. Bar. Everywhere you will be able to see bar. This bar is representing the average value. Average value. Average value. Monthly average value. Right? So what is this H naught? H naught is the monthly average. Monthly average global solar radiation. And this H naught is the monthly average extraterrestrial radiation. Extraterrestrial radiation. Yeah, extraterrestrial. That I will do this point. Extraterrestrial, right? And this A and B is the regression constant. Okay? This N, small n, is the A and B both are regression constant. Yeah, A and B both are regression constant. Fine. N is the number of available sunshine hour and capital N bar is the maximum sunshine hour. So should I come this side? Now it will be visible to all of you, right? I have written the formula Hg bar divided by H naught equals to A plus B in bracket small n divided by capital N, right?
So Hg is representing the value of monthly average global solar radiation. Hg, H0 is representing the monthly average extraterrestrial radiation. A and B are the regression constant, and N is the number of available sunshine hour, and capital N is maximum sunshine hour. Now I will let you know how we are going to define all these terms. So Hg is monthly average global solar radiation, right? Global means sum of direct plus diffuse. Global means sum of direct or diffuse. Direct radiation is also known as beam radiation. Beam radiation, right? Means global radiation is the sum of direct plus diffuse. Direct is also known as beam radiation, right? And extraterrestrial radiation means the radiation which you are getting outside the atmosphere. Extraterrestrial radiation, the radiation which you are going to get outside the atmosphere, right? And this A and B, though when you are looking at this, they are looking very small, A and B, but they are going to play a very vital role whenever you are going to decide the monthly average global solar radiation for any particular place. How? That I will let you know later on. And this small is N is number of available sunshine hour. Available sunshine hour means एक दिन में आपको कितना मिल रहा है. In one particular day, how much you are getting? 7 hour, 8 hour, 9 hour, 10 hour, like that. Suppose that in the morning we are waking up और देखते हैं कि we are getting a very sunny day. What we are telling? Today we are going to get good amount of sunshine hours. So that is basically representing by this N. Then based upon that, you have to calculate what will be the maximum, expecting maximum sunshine hour on that particular day, and that will be, that you will get by this. Average is taken over a month. Yeah. Whenever we are approximating any value or estimating, so the safer side is to take the monthly average. Means for this monthly average, very good question you have asked. For this monthly average, this fellow Armstrong has given that there is no need to calculate for the entire month. There is no need to calculate for the entire month. Try to get it. Suppose that you have to calculate for January. There is no need to calculate January 1, January 2 till 30th. Means in between value. Means calculate the, approximate the value of solar radiation on January 15th or 16th. Like that. For Feb, there is no need to calculate the throughout the value for the entire month. 15 or 16 or 14, because your Feb is going to be 18 or 29 days. Like this. Right? It may be different, na? Yeah, for different month it will be different. Again, it is calculated using the sky cover, 1 month sky cover into the panel size into that area. That is per day basis also they calculate. That is another factor when you are going to calculate for the solar panels. You are talking about the solar panel. But when in raw way we are going to approximate the value with the help of the Armstrong telescope model, then it is little bit different from that. Right? आप क्या पूछ रहे थे? But if we measure them... No. Let me, it's also a good question. Suppose that what I am telling, this is the monthly average value. Okay? So whatever you are asking to validate this, one thing you can do. Okay? You calculate the solar radiation for January 1st, 2nd, 3rd till 30th. Right? Some value you will get for every day. Then you calculate the average value of January 15th या 16th का आप करके देखो. ठीक है? Then validate it. Is the both of the values are nearby or little bit they are different? Got it? So when what you will visualize, almost the value are in the same bracket. Whether you are calculating from 1st to 30th or on 15th or 16th. Like that.
That's why this model given by Angstrom Parascott is referring to the average value. आप वो करके देखें. And I'm pretty sure I have seen it. You will get the approximate value. दोनों का same ही रहेगा, थोड़ा बहुत difference रहेगा. And even they have given the privilege. Even the privilege has been given to Angstrom side कि deviation of plus minus 5% is assessable. Right? Now the clear है? हाँ. So with the help of this formula, you will be able to predict or approximate or estimate the value of solar radiation at any particular day for any particular location. Ma'am, हाँ. estimation can also be done from past data. हाँ, past data you can do, but here I am asking, suppose that the places which are unprivileged, are you getting my question? For all the metropolitan cities and the cities who are getting the highlights, you will get the data from NASA side, you will get so many sources are there from where you will be able to get the data very easily. But suppose that there are some unprivileged, is not available. yes, in that condition what you will do? There is a question, what is the need for estimating all these things? जब thousands or lakhs of crores of data we are getting from different site, तो why to do this मगजमारी? क्यों करना? But अब जैसे किसी गांव का करना है, suppose that our Prime Minister is telling, उन्नत भारत, we have to do something from the unprivileged society, right? आप किसी गांव को गोद में ले रहे हैं, वहाँ पे सोलर पैनल आप लगाना चाह रहे हैं, टेक्नो इकोनॉमिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, सोलर पैनल्स क्या चाहिए आपको? फर्स्ट व्हाट यू नीड द सोलर रेडिएशन डेटा, उसी से तो करेंगे ना. समथिंग यू आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड सिस्टम फॉर द अनप्रिविलेज्ड साइड, व्हाट यू हैव टू डू? सोलर इज द मोस्ट अवेलेबल सोर्स फॉर ऑल ऑफ अस. पहले हम लोग उसी को उठाते हैं. देन व्हाट यू नीड? उस प्लेस का डेटा ही नहीं मिलेगा. ठीक है, दुर्गापुर इज ओके, जमशेदपुर इज ओके, बट जमशेदपुर में भी छोटे छोटे गांव हैं जहाँ लोग गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे सोलर पैनल हमको लगाना. देन व्हाट इज द कंडीशन? स्टार्ट करना होगा यहाँ से. दो वी आर टॉकिंग वेरी बिग थिंग्स, राइट? इसमें बहुत सारा स्लाइड है, दिखाएंगे, ठीक है, तुरंत चलता जाएगा. बट व्हाट इज द स्मॉल थिंग दैट वी हैव टू fetch and we have to start from the grassroots. These things are missing in my slides. Nowhere you will be able to see these things in my slides, because somewhere I have collected the data, as we are telling, data driven system, data set बनाया है, उसको system में लगाया है. Hybrid system, what do you mean by hybrid system? Means more than one renewable sources, right? Solar से काम नहीं चलता है तो क्या करते हैं? ऑप्शंस आर देयर. विंड लगा रहे हैं, बायो लगा रहे हैं, टाइडल लगा रहे हैं, बैटरी बैंक लगा रहे हैं, ईवी लगा रहे हैं. डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड योर यूजेस, you are making your system. Suppose that we have to propose one smart system. What we are doing? According to the ability, we are proposing our system. ऐसा नहीं है कि हमको जमशेदपुर के लिए सिस्टम बनाना है तो हम सारा चीज़ उसमें लगा देंगे. हिंदी you are getting ना? It is not like that. Suppose that I have to propose a smart system for NIT Jamshedpur. It is not like that. How many renewable energy sources we are getting सबको उसमें डाल देंगे? नहीं. हाइड्रो हम नहीं डाल सकते. Suppose that I have to make a smart system. What do you mean by smart? जो सारा काम करे, बिना पेन लिए हुए हम करेंगे. If you are telling yes boss, right? Smart का मतलब वही है ना. आज के दुनिया में क्या है? ओवरऑल. अगर आपने कहा कि कुछ पूछा, मैंने नहीं बताया, अरे कुछ नहीं आता है. That is not the smartness. हाँ. One question. For the month of January, instead of taking 31 days data, Yeah. we are taking the data for 14, 15 and 16, only 3 days. You are talking No, not is it like this no. or Don't get confused. I am telling, with the help of this formula, we are going to calculate the monthly average solar radiation. Fine. And
with the help of Angstrom model, what he has communicated us, we take the means averages. January we have to calculate the value of January. So you take 15 जनवरी का कैलकुलेट कर, हाँ, इधर 15 और 16, क्योंकि 31st का तो 15.5 होगा, तो 15.5 आप नहीं ले सकते हैं, तो 16 लीजिए. So that means, ma'am, only one day's data we are considering. हाँ, that one day data will be means sufficient for the entire month. Yes, same thing he has asked ना कि suppose that कि 1 का 2 का 3 का एक ही में कैसे आप बोल सकते हैं. That you can validate. Same thing I told you. That can be validated. आप जनवरी 1 का निकाल के देखिए, जनवरी 2 का निकाल के दीजिए, till 30th one day का करके पूरा निकाल के देखिए, और सिर्फ 16 का निकाल के देखिए. 30 का भी आप निकाल के देखेंगे तो throughout the day you have to average it ना, करेंगे ना. Tolerance is 5%. Yes. Same. So according to that one, this is one model. Suppose in that day the sky is cloudy for that particular day. That day you will not get it. It will vary. Because it's very common. Solar is a very fluctuating one in nature. Now we have to choose the actually sunny day. Yeah. So that can be 21st. No, support that for today you have to calculate. Be authentic. The question is, suppose that for today you have to calculate the solar radiation data for Durgapur. What you will get? January 17 at जो भी है कुछ नहीं मिलेगा भैया. But in January next year data may be different. तो क्या बोलते हैं? That's why we are always talking ना, solar is very uncertain. और depending upon the location it is going to vary. Location and latitude and longitude is also going to play a very vital role for estimation of solar radiation, right? अब जैसे मान लीजिए यहाँ भी कुछ नहीं मिले, मे भी जमशेदपुर में भी कुछ धूप होगा तो कुछ डेटा मिल जाएगा. तो like that, that's why we are telling solar is very much unpredictable. Totally आप rely नहीं कर सकते हैं. That's why we have to opt the other resources also when we are proposing any smart system, right? अब आपके यहाँ क्या है? सोलर के बाद क्या मिलेगा? विंड कैसा मिल रहा है आपका? दुर्गापुर में विंड कैसा मिल रहा है? Just I am trying to correlate my topic. ठीक है? सोलर आज धोखा दे दिया, आज तो कुछ नहीं देगा दुर्गापुर में, उसका दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे. आपने बोला विंड, बोला वो भी गया, ठीक है, वो भी गया. तीसरा क्या ढूंढेंगे? बायोगैस ढूंढेंगे. तो बायोगैस इट मस्ट फंक्शन वेल. जहाँ पे आपने लगाया है उसको रोज का मॉनिटरिंग चाहिए. ऐसा नहीं है सर कि बायो लगा के आप छोड़ दिए और आज आपको जरूरत है तो जाके देख रहे हैं कि whether it is going to produce something or not, right? उसको भी day to day monitoring चाहिए. Do you agree with me? We are talking about the smart system. सोलर धोखा दे दिया, विंड धोखा दे दिया, सर का बायो भी चला गया अगर सर रोज नहीं देख रहे हैं उसको. Storage. Yes. Storage will be there. Storage. That's why I am talking. तो storage तो day to day monitoring ना, according to the load requirement. You have to check it. सारा खेल क्या है? Load requirement का ही तो है. लोड ही तो फुलफिल करना है आपको. हम क्यों यूज कर रहे हैं 4ES? जो भी हमारा हाइब्रिड सोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्सेज, व्हाई वी आर यूजिंग इट? क्यों कर रहे हैं? टू फुलफिल द लोड डिमांड which you are expecting, the system which you are proposing, right? In a very simple layman term I am telling. Why we are talking about hybrid renewable energy based system? To fulfill the load requirement through the system which you are proposing. एकदम layman term. तो सोलर के अलावा विंड लगाया सर आपने, वो भी गया. सर ने बायो लगाया, वो भी गया. मैडम का बचा हुआ स्टोरेज, ठीक है, जिस समय जिससे मिल रहा था उसको स्टोर कर करके रखा है, और जब सब धोखा दे रहा है तो फिर उससे सप्लाई करके अपना फुलफिलमेंट करेंगे. वो क्या हुआ? स्टोरेज, बैटरी बैकअप जो भी आप लगाते हैं. Am I right to all of you?
एकदम सिंपल बेसिक बता रहे हैं, कुछ भी हम उसमें वो नहीं कर रहे हैं. Slides, so many high-fi things you will be able to see, but always we must start from the grassroots. This is my own funda. तो इससे आपका ये क्लियर हो गया होगा कि भाई हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड सिस्टम का क्या जरूरत है. Why we require this hybrid renewable energy based system? क्यों चाहिए? क्योंकि एक नहीं काम करेगा तो दूसरा तो उसको हेल्पर चाहिए. We have to find out some alternatives. So hybrid means compilation of more than one sources, right? Now what you have to do, you have to choose the sources according to your proposed system. आपका क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे मैंने बोला कि सर ने विंड लगाया, उन्होंने बोला बायो लगाया, हमको हो सके जमशेदपुर में लगाना हो तो हम नहीं लगाए उसको. According to your situation, your environment, your requirement, you have. And what is the motto behind it? To fulfill the load requirement. आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए हमको ये सिस्टम चाहिए. ठीक है, हाइब्रिड क्लियर हो गया इन लेमैन टर्म. अब टेक्नो इकोनॉमिक, व्हाट डू यू मीन बाय, फिर आएंगे हम इस पे. थैंक यू, मैं पीती नहीं हूँ. थैंक यू. फिर हम लोग आएंगे टेक्नो इकोनॉमिक. So one is that hybrid renewable energy based system, will it be applicable for small place like local energy work? कर सकते हैं. That will be No. Is that only applicable for that or for a vast area can be covered? नहीं, vast area can be covered. Means further it Because can be it's categorized. It's not generating much, no. It's not generating that much. It will, according to your requirement, you have to propose the system. Load requirement के हिसाब से आपको अपना सिस्टम प्रपोज करना पड़ेगा. और उसमें जो बोले, आपने बोला कि छोटा सिस्टम, that is categorized also. Simple village, then sector, then community. Are you getting? Your question is. Only this thing will not be sufficient to fulfill all the requirement for a vast area. That's why hybrid. आपके पास और भी कुछ सोर्सेज है, उसको भी आप क्लब करो. Right? Yes, that we can. But always we have to start from the smaller one. Depending upon the result which you are getting, तभी तो फिर उसको आप बड़ा में implement करो. पहले क्या होता है, प्रोटोटाइप का नाम सुना है? Have you heard the name of prototype? प्रोटोटाइप क्या है? मतलब कोई भी सिस्टम हमको बनाना होता है तो एक छोटा बना के पहले देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं. वो बन जाता है तो वी आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस कि चलो छोटा मेरा चल गया, बड़ा पे हम कर सकते हैं. राइट? अब उस पे आइए टेक्नो इकोनॉमिक. टेक्नो इकोनॉमिक क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इकोनॉमिकल. सबको क्या चाहिए? मिनिमाइज द कॉस्ट. हम लोग मार्केट में जाते हैं, सपोज दैट वी आर गोइंग टू मार्केट, वी हैव टू परचेज समथिंग, राइट, जहां हमको कम देना पड़ेगा. Being a consumer, where we have to pay the less, we are opting that one. So whatever system we are proposing, we have to look for the cost effectiveness. And how you will be able to do the cost effectiveness? Through techno-economic, means certain parameters will be there, certain modeling will be there, through which certain optimization technique will be there, through which you will be able to find out the optimal cost for your proposed system. ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक हो गया टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ हाइब्रिड. अब टेक्नो इकोनॉमिक में हम अपने पार्ट में मैक्सिमम सोलर का पार्ट लगाएं. दो इट इज कवर्ड विद सोलर, विंड, बायो एंड लिटिल बिट ऑफ EV also. EV penetration is also there. But the most focused part is the solar one. तो सोलर में आपको बताया, उसमें तो डेटा सेट मैंने लेके कर दिया. Suppose that I am also doing one small project in NIT Jamshedpur. A very unprivileged place is there, Chakulia. Means it's a small village. Mostly tribal peoples are there, right? वहाँ लाइट नहीं, बिल्कुल नहीं. अभी भी वहाँ मतलब वीकली तो हम लोग विजिट नहीं कर पाते हैं, मंथली जरूर जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ. स्टिल देयर वो डिब्री
जो जलता था डिब्री सुना, बॉटल में केरोसिन ऑयल डाल के, they are using that sort of, and yes, even they are not getting the lantern sort of thing. So we are planning a means light through solar, छोटा पैनल वहाँ पे हम लोगों ने लगाया है और उसको करके हम लोग कर रहे हैं कि एटलीस्ट इन द नाइट टाइम 6 to 7 और 5 to 7 एटलीस्ट चिल्ड्रन कैन स्टडी समथिंग। तो उसको वो जागरूक करने के लिए वी हैव गॉट सम फंड। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ IEEE? IEEE, it's also a very big platform. I am also related with IEEE. We are doing a lot of, have you heard WISE? WISE, Women in System Engineering. It's a part of IEEE only, but females are getting good amount of fund for doing their research work. But basically they are providing funds and motivating the leading technical women to get the fund and do something. आप लोग सर्च करके देखना WISE. I am related to that also from IEEE systems concept. So there is a society name IEEE. पढ़ाई तो आप लोग बहुत करेंगे, ये होता ही रहेगा, but it's a very vast platform. Even I was not aware about this, but once I went inside it, then I was able to get a lot of benefits, you know, जो कि simply हमको नहीं मिल सकता। So they have given me fund, name WISE में आप खोलोगे IEEE Village Society. So many societies are there, sir. I am telling to all of you. Basically हम लोग क्या जानते हैं, IEEE PES Society, Power System Society, Power Electronics Society. These are the well-known societies. But apart from that, the society, WISE, WISE, आप लोग देखना, ठीक है? पढ़ाई तो होते रहेगा, but उससे करके कुछ करो आप लोग। Women's in System Engineering, fine? उसमें कुछ जरूरत होगी तो you let me know, because now I am in the system and I am in the boards of WISE also. 2 months back they have given me the privilege to join as the board member of WISE, so that if I am going somewhere I must let you know what is WISE. So through that IEEE Village Society, they have initially given me not a huge amount, but they have provided me 5 lakhs. So it's used for me to develop a small village like Chakulia. And when you are doing something for the unprivileged society, you are getting recognized very fast. फिर उनको लगने लगता है कि आप ही सब कुछ हो। The warmth, the respect which I am getting whenever I am visiting Chakulia, it's overwhelming. लगता है यार वही दुनिया है, छोड़ दो ये सब। Whenever we are going through the slide, big things we are talking, but that never exist. ठीक है, जैसे सिस्टम की बात कर ले, हमने EV भी लगा दिया, हाइड्रो भी लगा दिया, कहाँ लगा है दिखाओ? It's a proposed system, it's a proposed model. ऐसा होगा, हुआ ये हम नहीं बोलते, हमने किया नहीं बोलते हैं। This system I have proposed and this type of output you will get. मिलेगा कि नहीं मिलेगा I don't know. All are the assumption, hypothetical. But what I am doing in Chakulia, छोटा सा ही है, पैनल को लगा के एक स्ट्रीट लाइट हम जलाएंगे। That is application based. Application. मैडम, what will be the cost of install? Like एक अगर बैठाना चाहते हैं, हाँ, इसमें तो that you have to calculate math. SOC, LOC. Have you heard the formula LOC? line of code, I don't know. नहीं, that is not line of control. I will let you know. Entire chapter is there. If you will ask me right now, even I will not be able to tell you the correct formula. But some formula is there. With the help of that, you will be able to calculate the exact one. Pricing, कितना पैनल चाहिए, कितना एरिया के लिए चाहिए, each and everything. कितना पावर ऐड होगा, मतलब ये अगर सोलर पैनल होगा, हाँ, ये कितना पावर ऐड करेगा? वो भी इसमें मिलेगा कैलकुलेशन। ये कैसे समझ मिलेगा, बता दूँगी मैं। I will give you the number, my number, वो किया हुआ है, किया हम लोगों ने सिस्टम के लिए। But exactly आप पूछोगे मैडम तो अभी हम नहीं
सो हम लोग कहाँ थे? IEEE विलेज सोसाइटी, राइट? आप लोग उससे जुड़िए, ठीक है? I will request all of you. It's a very big platform, and the lady who is behind it, Holly Handley, नाम उनका Holly Handley दिखेगा, HOLYHANDLY. If you are facing some problem, directly you can write to her also. Immediately she will respond. ठीक है? And it's not like that कि आप नहीं जुड़ सकते हैं सर. Wise है तो फीमेल ही जुड़ सकती है. Even you can, but they are giving the weightage to the women because it is women in system engineering. It's a part of IEEE. तो आप लोग उससे जुड़िए, और जैसे मैंने एक छोटी शुरुआत की है, how I have started a small initiative, I think you people must. ठीक है ना? और बातें तो hypothetically बुक में बहुत सारी चीज़ें, we can talk big things, but useless. At least when I am leaving this place, at least 15 to 20 days you will recall me. Oh, somebody has came over here and they have told like this. So connected to IEEE, आप लोग इससे जुड़िए. अभी एक उसमें निकला हुआ है, आप देखेंगे, they are providing 4,50,000 at a stretch. Only what you have to do, you have to make a proposal accordingly in which area you want to work, whether in power system, power electronics, aerospace, or so many societies are there. In India, people are not able to trap the real value of IEEE. Even I was not. But from this last 6 months, suppose that we are going to बोलते हमको प्रोजेक्ट चाहिए मैडम, सबको प्रोजेक्ट चाहिए. कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, they are going through your CV. Do you have any project? They will ask like, do you have any project? No sir. They will see you like anything. You are useless for them. How we can get the project? DST, SERB, they are not going to give us project. From last 5 years I am trying. It is coming back. Sir, so currently they have stopped. Sir, currently they stopped. have stopped. But how many people are getting it properly? Maybe they prefer IIT and MIT people. But we can't beg like that ना. You just associate with me, have a collaboration with me. IITs वाले को तो लगता है हम बेकार के आदमी हैं, हमको कुछ आता ही नहीं है, we are useless. They have that type of thinking. They are thinking we are not synchronized to their level. कि we don't have that level which can synchronize with their level. So what to do? Project तो चाहिए. From last 5 years I am trying. I am telling you the correct story. It is going in round 1, round 2, in the final one also. Even I have presented my project last year 29th November 2020. Still I am recalling the day at the NEEP. After presentation, it has been done now. Just think, जो आदमी झेलता है उसको कैसा फील होता है. But then I do the calculation, realized, and then I found out I have to find out the another alternative way. ऐसे नहीं मिलेगा, DST से नहीं मिलेगा. Then I went through IEEE. I became the member of IEEE. Though I was the member of IEEE from last 12 years, but never I have explored it properly. आप लोग भी बहुत लोग मेंबर होंगे, मेंबरशिप भरते होंगे, लेकिन कभी देखते नहीं हैं क्या है. पेपर डाउनलोड कर बस, राइट मैम? वही मैं भी करती थी. Every year I used to renew the membership, but have not explored it properly. जब धक्का लगता है, चोट लगती है, तो लगता है now I have to do something. Fine? खोल के देखा, IEEE system wise. Fine? देखा मैडम है उसमें. Instantly I messaged. मतलब मन खराब होता है ना, लगता है कि कुछ करे. In between you will get something. And within 15 minutes, I got the reply. कि why you are not joining our board? Join it. And there are so many ways. Join किया, you will not believe, 10 days I got the fund of 5 minutes. Madam, this is for the women's purpose. So what is the main purpose? Exactly. Main purpose, sir, I told you. So many schemes are there right now for you people only.
The scheme is going for 4,30,000. What you have to do? You have to make one proposal according to their choice in their area. अब उसमें बताया ना बहुत सारा पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी आप उसको ओपन करके देखिए, ठीक है? And that proposal will be reviewed by their board of panel, and if it is appreciable, they will give you. ठीक है? हम लोग के लिए थोड़ा easy हो गया. Women's के लिए थोड़ा मतलब मुझे लगा. Any private disputes, you will give it. Yes. नहीं. अब one thing I will let you. आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं. नहीं. Right now I'm talking about. आप कहानी सुनो ये. उसके इस पे आते हैं. प्राइवेट की बात कर रहे हो ना? SRM का नाम सुना है? SRM is one पर. It is NIRF ranking institute, man. सर NIRF का क्या होता है वो आपको भी पता है. ठीक है? पता है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करें. My project was turned down, and the fellow from SRM has got that project. The project of 5 crore. Fine. Why? IIT's fellow were associated with them. You are telling na? Yeah, IIT fellow were there, and the fellow who has got it, अब check करके देखना, भरत रजा. क्योंकि मैं भूल नहीं सकती उस बंदे को मेरा प्रोजेक्ट नहीं मिला, ठीक है ना? Every day भरत रजा snatched my project, and that project of 5 crore. And when I am analyzing his project and my project is far better than his project, right? But I don't have any collaboration. And through this channel, madam, IEEE channel, now I am able to meet that fellow. Bharat Raja. I met him in Delhi. When I got my project, I told him, Bharat Raja, your project is of 5 crore, mine is of 5 lakh. But I am happy. अगर उस दिन टर्न डाउन नहीं होता तो मैं दूसरा अल्टरनेटिव नहीं खोजती. तो thank you for giving me the new life. Now he is talking to me every day. Ma'am, we will submit one project in collaboration. No, I don't need any collaboration. ठीक है? तो being a woman faculty, sir will tell कि I am doing partiality. No, being a female faculty, I am telling all of you, if you need any collaboration from my side, I am willing. आप कुछ बनाइए, 5-6 लोग मिलके हम लोग भेजेंगे. क्यों भेजेंगे? क्योंकि now I am in the system. बोर्ड में है तो मुझे पता चलेगा. You know, कुछ भी जाएगा तो, but it is not like that कि करना नहीं है. कैसे करेंगे? आप ग्रुप बनाइए, आप हैं मैडम लोग बनाइए, उसमें हम भी कोलैबोरेट होते हैं. थिंक अबाउट इट, क्या करना है, एक कुछ इस टाइप का बनाते हैं, उसमें सभी लोग कोलैबोरेट होते हैं. और जब जो वुमेन्स का जो प्रपोजल होता है उसमें ऐसा नहीं है कि मेंस नहीं आ सकते हैं. मेन कैन ऑल्सो एज co-PI. यस, PI यू कांट बी द PI. सर लोग आप लोग PI नहीं हो सकते, PI हम लोग रहेंगे. You people have to be the co-PI. हमारे बात सुनना पड़ेगा. Yes. So try this one. IEEE wise. मेरा आने का एजेंडा, this was the main agenda because classes तो रोज चलते हैं. Every day. The class must be like that कि कुछ दिमाग में यहाँ छपे और जाके हम कुछ करें. टेक्नो इकोनॉमिक कोई भी आपको पढ़ा देगा. Even you people can teach me better than me my presentation. But अगर यहाँ से 5 आदमी को भी हम जगा के गए और कल को अगर आप लोगों में से किसी को प्रोजेक्ट मिलता है, you may recall me, right? तो IEEE को एक्सप्लोर कीजिए. और मैम आपका इसमें वाइज में there is no membership fee. Being a IEEE member, you can explore it. कोई फीस नहीं चाहिए और मैक्सिमम लोगों को उसको उस कम्युनिटी में ऐड कीजिए. एंड नेक्स्ट टाइम whenever I am visiting your institute, we must say we have some project in our hand through IEEE wise system. Ma'am, can you guide us to write the project? Sometime I think we made a What- mistake in. Whatever I know, definitely it will be my business. I am not that sort of person. ऐसे क्या होता है टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, एक को किसी को आया, दूसरे को नहीं बताएंगे, राइट? दिस इज द सीन इन इंडिया. That's why we are not able to do something.
आप फॉरेन में जाओ, मैं I have devoted during my MTech one project I did in Wisconsin University. It was a very short period for 6 months. That's why I am never describing it in my CV. That is my own experience. You will not believe, for one project 10 to 12 person are working. एक प्रोजेक्ट के लिए, छोटे से प्रोजेक्ट के लिए 10 से 12 लोग काम करते हैं, and the work is well defined to all of them. ठीक है? And they are doing their own work, and in the evening they are sitting all together and updating. कि तुम्हारा आज का टारगेट था, कंप्लीट हुआ कि नहीं. There is no ego. हमारे यहाँ क्या होता है, हम ज़्यादा किए तुम कम किए.